रणबीर और कंगना में हमेशा से बहुत ज्यादा क्लैशेस रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर कंगना ऋतिक कंट्रोवर्सी शी इज आफ्टर रणबीर। बट कंगना जो कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बोल्ड एक्ट्रेस है, उनके मुंह से कई बार सच बड़े ही बिटर तरीके से निकलता है, which can turn out to be quite offensive for the second person. बट रणबीर ने उनका क्या बिगाड़ा है, जानने के लिए let's delve into the video. Welcome to Blabbermouth. Subscribe to our channel to never miss out on any latest gossip in the town. So let the cat out of the bag. Rumors है कि रणबीर is lead in upcoming film Ramayan, but Kangna is quite unhappy, so she brutally bashed Ranbir on Instagram saying, "Recently I'm hearing news about another coming up Bollywood Ramayan, where a skinny white rat who desperately needs some suntan and conscience, he's infamous for doing nasty underhand PR about almost everyone in the industry, known for womanizing and drug addiction, after desperately trying to prove himself Lord Shiva in a trilogy, has now grown fancy to be Lord Ram." यहाँ वो रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को तो डिफेम कर ही रही है, बट शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेंट हिज इमेज फॉर हिज अपकमिंग फिल्म। चलो मान लेते हैं कि रणबीर डजंट हैव गुड इमेज व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। ही हैज एन एक्सप्रेशनलेस, मोरओवर अ सैड फेस, जो कि उसने खुद कपिल शर्मा शो में एडमिट किया था। तो लॉर्ड राम का रोल उसे देना थोड़ा डाउटफुल तो है ही, बट इस तरह से उसे पब्लिकली बैड एक्टर प्रोक्लेम करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अ 37-year-old established actress who is known for spilling the truth is now turning into a wannabe self-proclaimed woman who believes in pulling people down to reach the top. बट वो क्यों रणबीर के पीछे ही इतना हाथ धोकर पड़ी है, इसका भी रीजन है। कहा जाता है कि रणबीर was interested in कंगना after her film Queen got success, but she was at the time in love with ऋतिक। रणबीर के इंटरेस्ट के बारे में जानकर कंगना was surprised, since even रणबीर खुद उस टाइम कटरीना के साथ था। So then रणबीर in 2016 went to her house to offer her Sanju, but she rejected it, something रणबीर was not expecting at all. Then he started doing negative PR against her. He reportedly leaked the fake horse riding video from her film मणिकर्णिका, जिसकी वजह से कंगना को भी काफी ट्रोल किया गया, और इसी नेगेटिव लाइमलाइट की वजह से मणिकर्णिका फ्लॉप थी। कंगना ने कपिल शो में भी कहा था that रणबीर has a massive underground PR that attacks stars like guerrilla tactics. I actually don't doubt that Ranbir was trying to get with Kangna. He has a thing for rising star actresses, and there were even some flirtatious vibes from Ranbir's side at an event where Kangna received an award from Aamir. तो मान लेते हैं कि रणबीर was obsessed with and was chasing Kangna, but it's not that uncommon a thing to message someone you are interested in, right? और नेगेटिव PR फैलाने वाली बात भी इतनी गलत नहीं लगती, क्योंकि सच में हॉर्स राइडिंग वाला क्लिप वायरल तो हुआ था, बट कंगना's way of dealing with it is getting way too weird. I'm sorry, but we just cannot support Kangna after everything she has done. She had so much potential, but only if she allowed her work to speak for herself and not the bitterness. But शायद ये उसकी relevant रहने की नाकाम कोशिश है। She knows her box office numbers for the last few years and cannot accept it as reality. तो इसीलिए अपनी relevancy prove करने के लिए she is trying to blame everybody around her. Also, she has been attacking Ranbir Alia since 2019 after they started dating. But Ranbir Alia want to remain dignified by not mudsliding into public when they aren't the wrong ones. But for Kangana to accusing them of destroying her career just because they are star kids and labeling him of some maniac Casanova is sort of disturbing. तो इनके बीच में खटास तो है ही, बट कंगना को इतनी प्रॉब्लम अचानक रणबीर की फिल्म एनिमल की रिलीज से पहले ही क्यों हुई? आपको ये भी बता दे कि कंगना की भी फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है। अब शायद आपको समझ आ ही गया होगा। Also, she needs to stop such rants on Insta, especially the ones she articulates with words like rat and bimbo, जो उसने अनन्या पांडे को कहा था। जब एक 37-year-old woman 23-year-old का इस तरह मजाक बनाती है, तो how can she remain relevant? I'm sorry, but we cannot support Kangna after everything she has done. Even the post on Ranbir, the language she used was just so rude. I am no Ranbir fan, but I'll have to choose the lesser devil here, who is Ranbir. She always triggers people so that they react, and then she starts playing her victim outsider card. And अब तो everybody in Bollywood has stopped caring. She hasn't had a clean hit in ages. उसकी credibility भी कम होती जा रही है because of all the antics she had pulled. She is sabotaging herself well enough. एंड लोगों का क्या है? वी आर ऑल मोर देन हैप्पी टू जस्ट वॉच द शो। आपको बता दें कि रणबीर प्री टीजर्स हैज ऑलरेडी गॉटन रिकॉर्ड व्यूज, बट शायद कंगना की दुनिया में तो हिट रामायण वो होगी जिसमें कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर, मे बी सलमान, विल प्ले एज राम, कंगना एज सीता, रणबीर एज रावण एंड आलिया एज सूर्पनखा।